you a few situations. Okay, I'm giving you a few situations. In case one, I have a solution in which, let us say that I have water only here. Okay, here I have H2O. Okay, and in this water molecule, what did I do? I added Na plus ions. Let us suppose Na plus ion है ना, ऐसे तो डाल नहीं सकते, but let us suppose I added Na plus ions. Okay, and I added how much Na plus ions? Let us say we added 1 molar, है ना, 1 molar Na plus ions. Okay, everything fine till here? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. What about you, Hanifa? Clear? Yes, sir. Okay, अब देखिए. Now, after that, what I did, I took the same thing. Now, I have added the Na plus, right? And then what did I do? I added. So let us say, अभी 1 मोलर ही डाल के क्या क्या हम लोगों ने, we calculated the osmotic pressure. So it is equal to CRT, है ना? And उसमें क्या होगा? We know what is the C here. It is 1 molar, right? C is 1 molar. And let us say pi is equal to CRT here. Pi is equal to CRT, and we can also write pi is equal to RT. Pi is equal to RT. ठीक है? No doubt till here. Yes or no? Please Yes, tell me. Okay. Then I can also write. I can also write. This C. C is equal to. C it is equal to how much? It is equal to pi upon RT. ठीक है? No problem till here. yes, Yes, sir. Now what is C? C is NB upon V, and this is also equal to pi upon RT. And what is number of moles? Number of moles is equal to how much? Number of moles will be equal to WB upon MB, right? WB upon MB into V. ठीक है? WB upon MB into V. This is equal to pi upon RT. अच्छा, अब यहाँ से हम अगर करेंगे तो this MB will be equal to how much? MB will go there, and this will be equal to WB into RT upon WB into RT upon pi into volume. Correct, sir? yes, Okay. Now everything is same. Everything is same here now. Okay. Now in this case, what I will say, let us suppose that we have just added Na plus ions. Okay. There will be some molar mass. There yes, will be sir. some molar mass, है ना? And there will be, let us suppose that this is pi 1. This is equal to pi 1. Then we added Cl negative. That is also 1 molar. That is also 1 molar. Okay. Now in the second case, what will happen? In the second case, now we have Na plus also and Cl negative also, right? Now in this case, what is going to happen? The pi 1, this will be pi 2, sorry. Pi 2 will be equal to, we have Na plus 1 molar, that is C1, plus C2, that is 1 molar of chlorine, into RT, correct? Hai? We have 2 solute molecules, right? And both of these concentration I have to take. Correct? Yes, है ना? यानी कि C1 कितना था आपका 1 and C2 कितना था आपका 1. So pi 2, it is going to be equal to what? It is going to be equal to 2 into RT. हनीफा आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, हनीफा? No? Yes, sir. Got it, sir. आया ना? Got it? ठीक है. Yes. अच्छा, अभी तो ये हमने क्या किया था? We added Na plus separately and Cl negative separately, है ना? Then this is the case. But what will happen if I add? What will happen if I add 1 molar NaCl? Now, if I add 1 mole of NaCl here, if I add 1 mole of NaCl in this case, what is going to happen? Then you will think, okay, fine, pi will be equal to CRT, and C is equal to how much? What is the concentration of NaCl? It is equal to 1 molar. So 1 RT, है ना? यहाँ पे आपने क्या किया? Pi is equal to 1 RT, right? yes, sir. इस केस में क्या आएगा? Pi is equal to 1 RT. But if you add 1 mole of NaCl in the solution, what you will get? You will get 1 mole of Na plus, and you will get 1 mole of Cl negative. Is that right? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. तो बताइए ये true Yes. है, right? Is this true case? That means this is the second case. Is this true, or is this true? The first case. The second one. Second one यानी कि pi is equal to 1 RT या pi is equal to 2 RT, कौन सा सही है? Pi equal to 1 RT.
What about you, Hanifa? What do you think? Hanifa? I think the second one. You mean this one? Yes. Okay, fine. Achha. Pi is what? It is a colligative property. Yes, sir. Correct? Hai? Achha. How many moles of Na plus is there? One. Yeah. One. How many moles of Cl negative is there? One, na? Yes. Right. Achha. Will it differentiate between Na plus and Cl negatives? Will osmotic pressure differentiate between Na plus and Cl negative? Now we are talking about the type of solvent, the type of solute, the nature of solute. Will the pi differentiate between No, sir. Na plus? No, na? It will not differentiate, right? So even though you are adding 1 mole of NaCl, even though you are adding 1 mole of NaCl, when as soon as it get inside the solution, is it NaCl anymore? No, it is not NaCl anymore. What it is? It is 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl negative. Is that right? Yes or no, Hanifa and Zaid? Yes, Hanifa? Yes. है ना? Yes. अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा, and the osmotic pressure or any colligative property, it is not differentiating between Na plus and Cl negative. It is treating each of them as individual solute. Individual solute treat करने से क्या होगा? This one will be the true osmotic pressure. बात समझ में आई? Yes or no? Tell me. Yes, sir. है ना? Yes. So whenever you add anything which is electrolyte, anything which is electrolyte, है ना? Anything which is electrolyte and which can dissociate, then उसको हम लोग कैसे लेंगे? We will take that in the dissociated form only. We can take that in the dissociated form only. अच्छा, let us suppose what will happen if I add Rifat. Assalamu alaikum. How are you? I'm fine. You are late. You know you are not fine. Why are you late? Sorry, sir. I have problem connecting. The problem in the connecting. मिस हो गया लेकिन मिस हो गया, एकदम मिस हो गया. हनीफा एंड जैद मिस हो गया ना? Yes. है ना? मिस हो गया बिल्कुल. ठीक है. You will understand, Rifat. Okay, I will focus on you. You just keep your mic on. Okay. Okay. ठीक. Colligative property, does it depend on the solute particles or the number of solute particles? It depends on The number. colligative number of solute particles. The number of solute particles. Refer. I am expecting answer from you. Colligative property depends on Solid particles. number of solute particles. Yeah. Yes. Number of solid particles. Does it depend on the solute particles? Number of solid particles. You will say that no, it doesn't depend on the it doesn't depend on the solute particle. It depends on the number of solute particles. जब सवाल कोई पूछ रहे हैं ना, does it depend on the solute particle? What he is saying? He is saying that if you add glucose, तो कुछ और होगा, and if you add NaCl तो कुछ और होगा नहीं, है ना? We know that it doesn't depend on the nature of solute. It depends on the number of solute particles. ठीक है? अच्छा. Now you tell me, if I will add here, let us suppose MgCl2. In water, I am adding what? I am adding MgCl2, yes or no? MgCl2. How much we are adding? I am adding 1 mole. Okay. Now, as soon as it will dissolve in the water, will it remain MgCl2 या फिर dissociate हो जाएंगे? It will Yes, dissociate. Dissociate. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? You will get 1 mole of Mg plus and you will get 2 moles of Cl negative. सही है ना? अच्छा, अब ये बताइए, will the water differentiate between Mg plus and Cl negative? या दोनों सेम ही चीज है? मतलब it doesn't differentiate ना. ये तो देखने का नंबर कितना है, right? So how many moles of solute particles do you have? 3. Very good. डाला कितना था हमने? 1. डाला कि अगर यही लेके चलते तो पाई वुड बी इक्वल टू 1 RT, लेकिन असलियत में क्या होगा? पाई इज इक्वल टू 3 RT. 3 RT. समझ में आई बात? All of you tell me, all of you understood this, yes or no? Yes, sir. ठीक है. Now, before adding, please listen. Before adding MgCl2, we are seeing that okay fine, 1 mole तो है, dissociate ना हुआ, 1 mole तो है, and then we calculated the pi. क्या हमने कैलकुलेट कर लिया? ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, डालने से पहले. नाउ हियर अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज जस्ट सेकंड क्लास. आई हैव टू रिपीट दिस, वेरी इंपॉर्टेंट है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी फिजिकल वैल्यू, व्हाट? any physical value
कैन बी आइदर, उसके दो तरीके होते हैं किसी भी नंबर को लाने के। ज़ैद बताइए कौन से दो तरीके होते हैं? So are you talking about like calculation and हाँ, एंड yeah we discussed एंड like calculation, कैलकुलेशन एक हम एंड calculation चला सकते हैं और दूसरा हम दूसरा mechanically like कोई tool use करके नहीं, instrument use हाँ, करते हैं। तो मेजर कर सकते हैं उसको, राइट? वी कैन आइदर मेजर समथिंग और वी कैन कैलकुलेट समथिंग, ठीक है? विपत प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर में देखिए, कैन यू एवर measure the volume, Vipat? Measure the volume. Volume के measure देखिए, if you want to measure anything, you need some tool or instrument, right? जैसे आपको length measure करने के लिए बोला गया, then you will say give me a scale, correct है? हाँ. Yes or no? है ना? लेकिन volume का आपने कभी measurement नहीं कीजिएगा. What you will do? You will always calculate, and whenever you are going to calculate, you need a measurement, है ना? आपको क्या चाहिएगा? Length रहेगा. That is cheap. What do you need? You need cheap measures. चीप मेजरमेंट चाहिए आपको, यानी रूलर का दाम नहीं है ना ज्यादा. यू कैन जस्ट टेक अ रूलर एंड मेजर द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब एंड देन यू विल गेट द व्हाट, यू विल गेट द एज लेंथ. एंड यू आल्सो नीड अ फार्मूला, करेक्ट है? यस और नो? ठीक है ना? सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेजर समथिंग, व्हाट यू नीड ओनली अ टूल, ठीक है? आपको क्या चाहिए? बस टूल चाहिए. एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, यू नीड अ चीप मेजरमेंट एंड अ फार्मूला. सही है? यस और नो? हाँ. ठीक है. Now, and always please listen, whenever you are measuring a tool, what you are doing an experiment, right? This is an experiment. Whenever you are measuring, that is an experiment. And whenever you are calculating, that is theoretical. You do it in your pen and paper, right? You don't need any tools and like you don't need any apparatus and setups, right? If you have this cheap measurement, ये आपको given हो, and you know the formula, then you can calculate. And this is also this is always theoretical. ठीक है? कोई दिक्कत अभी तक? रिफत, हनीफा एंड ज़ैद? नहीं. नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे आपको बताना है, देखिए, बिफोर डिसॉल्विंग द MgCl2, बिफोर व्हाट? बिफोर dissolving the MgCl2, what we can do, we can calculate the osmotic pressure, and this osmotic pressure will be what? It will be calculated. क्योंकि अभी तक जब तक हमने डाला नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा कहां से? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा नहीं तो हम मेजर कैसे करेंगे? सो बिफोर डिसॉल्विंग दिस, it is all calculated. This is what? This is calculated osmotic pressure. This is what? Calculated osmotic pressure. And after we have dissolved, then this osmotic pressure can be measured with the tool because we have added it, and then we can measure the osmotic pressure. And this is what? This is the measured one. This is experimental. सही है? Yes or no? Please tell me. Yes. Okay. Now, when you calculate the osmotic pressure, अब कैलकुलेट कीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड फ्रॉम दैट यू विल कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, है ना? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड फॉर द determination of molar mass of the solute. And if you calculate osmotic pressure, and from there you will get a measurement. This is what, so I will say calculated, and there will be MB. This will be what? Experimental. ठीक है? This will be experimental. Okay, calculated and experimental. अब ये बताइए, जो MgCl2 का मोलर मास है, जो MgCl2 का मोलर मास है, that will be true in this case, right? Calculated one, है कि नहीं? बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन आपने क्या लिया है? 1 मोल ही तो लिया है, करेक्ट है? yes or no? Tell me. है ना? एंड यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपके पास? यहाँ पे आ जा रहा है आपके पास 3 moles, right? You are getting 3 moles, so this will be not the normal. ठीक है? तो इसी को हम लोग, that is the why there is a topic which is known as abnormal मोलर मास. ठीक है? कैलकुलेट किया तो कुछ और आया, एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ और आया, है ना? तो उसी में बोलते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास है. ठीक है? दैट इज द एबनॉर्मल मोलर मास. सो विल राइट द टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास. आई होप यू अंडरस्टूड द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग, करेक्ट? डिसोसिएशन की वजह से. यस और नो? इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. है ना? नाउ यू विल राइट एबनॉर्मल मोलर मास. Okay. Now please write this with me. Please write this with me, okay? For the substances undergoing association
or dissociation. Undergoing what? Undergoing association or dissociation. What will happen to them? Association or dissociation kahan pe? In solution. Molecular mass determined from colligative property is different. That means it can be higher or lower. Can be either higher or it can be lower. From colligative property is different from the expected value. From expected value. Please remember this. This experimentally determined molar mass is known as abnormal molar mass. ठीक है? Is known as abnormal molar mass. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. What about others? All of you got this? Yes or no? ठीक है? अच्छा. एक काम करते हैं. Phi is equal to 1 RT and phi is equal to 3 RT. Tell me what is the formula for MB? If I use the osmotic pressure, क्या formula होता है? WB into, बताइए WB into? So WB into RT divided by pi V. WT into RT divided by pi into V. ठीक है? Now let us say that this is calculated. ठीक है? तो calculated वाले में you all know MB is equal to WB into RT. Calculated वाले में आपके पास क्या था? पाई के वैल्यू, पाई का वैल्यू था 1 RT, है ना? So you write instead of pi you will write RT into V. चलेगा? All of you yes or no? Please tell me. Clear है? Yes. This is calculated. So RT will get cancelled, and you will get WB upon V. This is MB. एक काम करते हैं, M calc लिख देते हैं, है ना? मोलर मास समझ जाइएगा किसका है? This is the molar mass of solute. ठीक है? Similarly, the molar mass of experimental it will be equal to WB into RT upon pi into V, है ना? और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है एक्सपेरिमेंटली? 3 RT. यहाँ पे 3 RT लिखते हैं. अब इसको कैंसिल कीजिए, RT upon RT. ठीक है? Now this M experimental will be equal to how much? WB upon 3 volume, है ना? अब यही देखिए आप, M experimental and M calculated, which is greater here? Which is greater? बताइए कौन बड़ा है? So calculated. Calculated is greater. Yes or no? Please tell me. Yes. What about others? है ना? So calculated is the greater one, and this is the difference, है ना? Calculated is the greater one. Also, this calculated is the expected value. जो आपका MgCl2 का आना चाहिए था, because we have taken 1 molar only, है ना? This is the correct one. This is normal. ठीक है? Calculated. जो आपका experimental होगा, है ना? तो ये बेकार में ज्यादा आ गया, 3 मोल तो हमने डाले ही नहीं है, राइट? ये 3 मोल तो हो गए, राइट? This 3 moles is not what we have added. This is abnormal. Yes. ठीक है? Normal, and this is what? This is abnormal. And when we divide this, that means when we divide the normal, क्या बोलते हैं इसको? Normal molar mass
divided by abnormal molar mass. Then what you will get, normal molar mass में क्या है, WB upon V divided by WB upon 3V. सही है? Yes. Yes or no? तो ये क्या होगा, W by V कट जाएगा and this 3 will come above. Yes or no? Yes. ठीक है, and this 3 it is known as Van Hoff factor. ठीक है, ये 3 था, आपको फॉर्मूला देख के भी पता चल रहा था MgCl2 है ना, that it will dissociate and it will form 3 different ions. Correct है? Yes. All of you understood what is this Van Hoff factor? Yes or no? Abnormal upon normal is, sorry, normal upon abnormal, it is equal to Van Hoff factor. Okay, Yes. ठीक है, now let us write Van Hoff factor. Please write with me. It is the ratio of the experimental is the ratio of the calculated, which is the ratio of the calculated value. मोलर मास का नहीं लिखते ना, नॉर्मल मोलर मास अपॉन, ऐसे लिखते इसको, इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड colligative property to calculated value of the colligative property. ठीक है, Yes. that means Van Hoff factor. So it is given by I. Okay, इसको यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, is given by small I. So I will write I is equal to colligative property experimental divided by colligative property calculated. ठीक है, and also you will see that all of the colligative properties ना is inversely proportional to the molar mass of solute. ठीक है, so यहाँ से हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं, I it will be equal to, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास. ठीक है, Yes or no? Got it? Yes, sir. Okay. आपके क्या आया था यहाँ पे, जो Van Hoff factor आया था क्या 3/1 आया था? Yes or no? Yes. T क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन. सही है, और ये क्या है, पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन. सही है, करेक्ट है? Yes. Yes or no? So we can also write a formula. I it will be equal to what? Number of particles before dissociation. So first after dissociation. Sorry. और एसोसिएशन भी हो सकता है जब, तो एसोसिएशन. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट द केस ऑफ डिसोसिएशन ओनली. देयर इज वन क्वेश्चन दैट आई विल डू हियर, दैट इज विद एसोसिएशन. ठीक है, Okay. number of particles after association divided by
number of particles before dissociation or association. कोई दिक्कत? No, sir. Done all of you? आगे बढ़े? Yes. ठीक है, देखिए अब हम जैसे आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है? क्वेश्चन इज डिटरमाइन दी Van 't Hoff factor for following. Okay, number 1, NaCl ये डिसोसिएट होके कितने आयंस देगा बताइए? Sir, 2. 2 ना? ऑल ऑफ यू एग्री? यस और नो? हनीफा, रिफत? Yes. Yes. ठीक है, सो I will be equal to 2. एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं. Na will give me Na plus Cl negative and I will be equal to 2. सेकंड केस क्या हो जाएगा आपका? लेट अस से इफ यू हैव KCl, इसमें क्या होगा बताइए? K plus and Cl negative, I will be equal to 2. सेम केस है ना? थर्ड देखिए, MgSO4 Sir, 3. कौन कौन सा बताइए? आयंस बताइए. SO Mg 3 Mg. 3 Mg. Mg 3 हो जाएगा क्या? एक ही Mg है यहाँ तो. Yes. हाँ बताइए. Mg G क्या SO2. चार्ज होगा? अरे हाँ, Mg में चार्ज क्या होगा ये बताइए पहले आप. 2 पॉजिटिव ना? एक तो धीरे कौन बोल रहा है इतना? हाँ, why someone is saying so much slowly? और SO4 में 2 नेगेटिव, यस और नो? Yes, sir. है ना? तो कितना हो गया? I is equal to 2 ही है यहाँ पे. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. अच्छा, फोर्थ केस. अब है आपके पास K2SO4. तो यहाँ पे क्या होगा? You have 2 K plus ions and 1 SO4 2 negative. तब आई कितना हो जाएगा? 3. दिख रहा है ना? Yes. राइट, CaCl2. चलिए इसमें बताइए आई कितना होगा? सेंड इन चैट. ओके, वेटिंग फॉर रिफत एंड जैद. Sir, I have sent. नहीं भेजा आपने, लर्निंग को भेज दिया शायद. देखिए किसको भेजा. यस. सो हाउ मेनी? Ca 2 प्लस. और क्लोरीन कितने भाई? 2 क्लोरीन है ना? Minus. है ना? 2 Cl नेगेटिव, 3 होंगे. जैद एंड हनीफा क्या हो रहा है? चलिए आगे कीजिए, बताइए. सेंड इन चैट. आई विल बी इक्वल टू हाउ मच? Sir, what will be the charge for chlorine? हनीफा, दैट इज यू ना? Yes, sir. Fluorine, does it need electron in order to complete the octet? Or it will gain electron to complete the octet, या फिर it will lose the electron to complete the octet? Tell me that. Okay. It will. Gain. How many electrons will it gain to complete the octet? हाँ हनीफा.
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, अच्छा फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? यस हनीफा, नो आइडिया हनीफा? Oh, sorry, I didn't get one. So, सॉरी व्हाट? one. व्हाट वन? चार्ज? Yes, पॉजिटिव और नेगेटिव? positive. फ्लोरीन और पोटेशियम किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? Fluorine. No, fluorine it needs electron या lose, it will gain electron or lose electron. Fluorine will gain electron, right? Yes or no? If it is gaining electron, then what kind of charge will be there? Positive or negative? If it is gaining electron, Negative. negative, right? It will be K positive. Two. बताइए. Send the answer in chat. Yes, Hanifa. I'm waiting for Zaid and Rifat. Yes, Rifat. Waiting for Zaid now. Correct, Zaid. So this will be Mg 2 plus 2 Br negative. क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है. Now listen, one of the most important case is this 8th one. ये सारे भी जो केसेस थे ना, इन सब में क्या हो रहा था? What was happening here? There was dissociation. I is greater than 1 and what is happening? Dissociation. एक केस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, that is of benzoic acid C6H5COOH. So when you are adding C6H5COH, what it happens? It associates. Okay. If you take two molecules of this, two molecules, if you will take 1 mole also, na, then what will happen? From 1 mole, there will be plenty of molecules, and this will associate into C6H5COOH whole twice. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है? What is I? I it is equal to number of particles after dissociation. Number of particle after dissociation is how much? कितने मोल है यहाँ पे? एक है. ये तो एक ही चीज होगी ना. This is dimer. So this will be equal to I is equal to 1 upon I is equal to, after association we have only one molecule. Before association we have 1 upon 2. ठीक है. This is going to be I2. ठीक है. Now I, please remember, if it is association happening, then I will be less than 0. ठीक है. If there is dissociation happening, I will be greater than 0. सही है. कोई दिक्कत यहाँ तक? So greater than 1 actually. अरे सॉरी हाँ, थैंक यू वेरी मच. मैंने गलती लिख दिया. ग्रेटर देन, सॉरी, स्मॉलर देन 1 होगा यहाँ पे, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा. थैंक यू सर. Welcome. क्लियर है सबको? यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes. Let us see. Right, modification of equation of
colligative properties. ठीक है. So we are seeing that when we are doing this experiment, है ना, and we are getting the experimental values of molar masses and different and different things. What we see that those are giving abnormal molar masses, है ना. The experimental values are giving abnormal molar masses. So what we will do, we will write it like this. Modification. We will modify something, है ना. So number one, RLV, relative lowering of vapor pressure. ठीक है. Relative lowering of vapor pressure means the P naught total minus P A divided by P naught of A. उल्टा लिख दिया हमने, sorry. P naught of A minus P total upon P naught A. It will be equal to what? Chi B, है ना. ये आपको क्या था? This was the equation for relative lowering of vapor pressure. अब जब इसमें करेक्शन लेके आएंगे तो यहाँ पे what I will just multiply, I will multiply the I. अभी जब मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या मिल जाएगा हमको? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. दिस इज द कैलकुलेटेड, आई डाल दिया तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिल जाएगा. सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टीवी. इट इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू द मोलालिटी. बस आई मल्टीप्लाई कर देना, नथिंग एल्स. ओके. देन व्हाट डू वी हैव आफ्टर ईवीपी? वी हैव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ. This will be equal to how much? This will be equal to I into Kf into molality. Fourth is osmotic pressure, and this pi will be equal to I into CRT. ठीक है. We just have to multiply in order to get the experimental values, nothing else. Done? Okay, that is done. Waiting for others. Okay. Now write a question. A 1 molar aqueous solution of trichloro acetic acid is heated to its boiling point. ठीक है. solution है. solvent क्या है यहाँ पे? please tell me what is the solvent here? What is the solvent? What is the solvent? हाँ जैद बताइए. Sir, I think water, aqueous. Water, that हाँ aqueous है ना. ठीक है. हनीफा, aqueous right? Yes, sir. ठीक है. तो what will be the boiling point of pure solvent? यहाँ पे pure solvent का boiling point कितना होगा? So 100 degrees Celsius. That is 100 degrees. हाँ, very good. ठीक है. Now trichloroacetic acid is heated to its boiling point. It's heated to its boiling point. It is found that the solution has boiling point of 100.10 degrees Celsius. 100.10 degrees Celsius. Determine the Van 't Hoff factor for CCl3 COOH. ठीक है. Given that Kb for water, (0.512 Kelvin kg per minute. ठीक है. This was asked in CBSE 2012 for 2 marks. सब कुछ दिया हुआ आपके पास है ना. What do we have? You have the boiling point of solution, boiling point of solvent आपको पता ही है ना. You have also the molality. ठीक है.
इतना आसान सवाल है. What are the things that you already have? TB दिया हुआ है, T naught भी आपको पता है, solvent का boiling point. Kf is also given, molarity is also given. You just have to calculate the I. So I will be equal to TB minus T naught B divided by Kf into molarity. चलिए, calculate and tell me what is the answer. Sir, do we have to convert it to Kelvin? किसको? The 100 degrees. दोनों में करके बताइए कितना आ रहा है डिफरेंस. ओके हनीफा, ठीक है. फर्स्ट कैलकुलेट द डिफरेंस इन केल्विन, देन So कैलकुलेट it's द डिफरेंस coming इन. 0.10 K. अरे 0.10 के कभी हो ही नहीं सकता दुनिया में. कभी हो सकता है 0.10? 0.10 K. कितना? 0.10 K. 0.10 के. और डिग्री सेल्सियस में? डिग्री सेल्सियस में अगर हम रखेंगे तो it will come same but 10 degree Celsius 0.10 degree Celsius. कहाँ जाना रहता है आपको जैद? हम तो इंतजार में रहता है क्या आपके? हाँ जैद, नो ना? हाँ ठीक है, सही कहा आपने. योर आंसर इज करेक्ट, बट द चॉइस ऑफ वर्ड्स आर काइंड ऑफ डॉजी. बट ठीक है, I understand that you get the gist of it. Hanifa, and now you have to tell me what is the difference in temperature. If I calculate it using Kelvin, then I calculate it using degree Celsius. बताइए. Yes, Hanifa. Sir, I'm doing it. अच्छा, doing it. Okay, fine. बाकी लोग तब तक I calculate कीजिए. Recalculate Zad. I don't think that is correct. Hanifa, can you please turn the mic on? हनीफा, ये क्या आया है आपका? आई आया है या डेल्टा टी भी आया है? यस हनीफा, व्हाट इज दैट? Delta. आपने तो पता नहीं, लाइक कैन यू प्लीज सी व्हाट यू हैव रिटन एंड स्पीक लाउडली. कैन यू रीड व्हाटएवर यू हैव रिटन? 0.0 तो पॉइंट तो है ही नहीं उसमें. 10 लिखा है आपने. 0.010. No, sorry, 0.10.
I Huh? typed it wrong. Type it I again. typed Type it it again. wrong. Type it again. दोनों में सेम आ रहा है केल्विन और इसमें? Yes or no? Kelvin, I thought. हाँ सेम ना? No. In Kelvin and degree Celsius same, right? Yeah, yes, sir. Yes. It's same. Okay. Yes. Okay, Rifat, what is this? I. Rifat, it is I. Yes. Kf is equal to 0.512 into molality is given as 1. Yeah. Is there anything else? No, sir. Yeah. Oh, no, I think Zad, then your answer is fine. Okay. I think I wrongly wrote it 0.10. It should be 0.18. Okay. If I calculate from here, then it will be equal to what? 0.10 divided by 0.512. This will calculate and guess. This will be around 100 upon 512. है ना? 0.1 upon 5 के करीब है, तो it will be 0.1819. यही आ रहा है ना शायद? Yes, sir, sir. no? 195 आ रहा है. 195. ठीक है. 1 upon 5 is equal to almost 2 ना? 0.2. Yes. ठीक है. It will be a bit lower than that. 0.19. ठीक है. इनका कितना आ रहा है इतना? रिफत आपका कैसे आ रहा है? 1.562. हाँ? उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद अगर 0.1 by 0.064 नहीं. क्या? रिफत कैन यू प्लीज टेल मी? कैलकुलेट करने के बाद अगर 0.1 by 0.064 0.064 क्यों करेंगे? हाँ रिफत, ये तो आई आ गया ना, कैलकुलेट कर लिया आई आपने, फिर उसके बाद क्या करना है? हाँ नहीं, और मेरा आई ये डिनोमिनेटर में आ रहा था तो नहीं, ये आपका सही आया, ये देखिए, इज दिस फ्रैक्शन राइट? ये सही है, इतना है आपका? हाँ उल्टा आ रहा है आपका? हाँ 5 नहीं सही आ रहा है. ये 100 अपन 512 है ना? हाँ मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. Calculation mistake. Now you tell me, all of you, I is equal to 0.195. This solute is undergoing association या dissociation? Sir, association. Association है ना, because I is less than 1. Hanifa and Rifat, समझ में आया आपको? Yes or no, please tell me. Yes. ठीक है. Yes. अब तो ये सारी बातें हो गई उन solutes की, है ना? We have just taken into consideration of those solutes which are completely dissociable, ना? Whose degree of dissociation is equal to 1. That means they are strong electrolyte. None of the electrolytes are in the combined form. Everything will get dissociated. Now let us see what is going to happen if the degree of dissociation is not 1, it is less than 1. That means, please listen very carefully, don't write anything. Please listen very carefully. If I take 100 AB, then जब dissociate होता है ना, when it is getting dissociated, what we get 50A plus 50B, है ना? अब कितना बचेगा आपके पास? 50AB तो बच जाएगा. Yes or no, please tell me. Correct? Yes. Yes. That means half of the AB, and यहाँ पे यानी कि degree of dissociation जो कि हम alpha से denote करते हैं, the degree of dissociation alpha will be equal to half. That means half of whatever you have taken is getting dissociated. Yes or no, please tell me. Yes. Yes, sir.
इज दैट राइट? ठीक है, अब देखिए Yes. इसी को लेके चलते हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर किसके लिए? फॉर weak electrolytes. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, for weak electrolytes what will happen? I will start with the point saying that let us assume the degree of dissociation is equal to alpha. Let degree of dissociation is equal to alpha. कितना है आपके पास? It is equal to alpha. Okay, and we have the for ax and dy. ये समझ में आ रहा ना आप लोग को? yes or no please tell me. Yes, sir. इसमें बताइए MgCl2 में what is the value of x? x की वैल्यू कितनी है MgCl2 में? So Mg में 1, x is equal to 1 ना? yes sir, x is equal to And 1 and y equal to 2. ठीक है, अभी बात बताइए Mg प्लस 2Cl नेगेटिव। ठीक है, अभी आप बताइए सी Mg को 1 लिख दें, Mg को 1 लिख देते हैं। 1 यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, एंड 1 कहाँ पे आ रहा है? ये चार्ज में भी आ रहा है। ये सर प्लीज टेल मी, इज दैट राइट? Yes. सबको दिख रहा है 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है? देन इफ यू हैव 1 इन द y, देन ये y कहाँ पे आएगा? कैटायन के चार्ज में आएगा और द नंबर ऑफ एनायन में आएगा। दिख रहा है सबको? ये सब नो रिफत एंड हनीफा आया ना? है ना? दैट मींस इफ आई विल राइट द डिसोसिएशन फॉर ax एंड by, तो क्या होगा आपका? जो x है आपके पास सबसे पहले कहाँ पे आएगा? इट विल कम इनटू द नंबर ऑफ a, है ना? और a पे चार्ज क्या होगा? y पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, Cl2 है तो 2 पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज जनरल हाउ वी राइट, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ डिसोसिएशन, हाउ वी राइट द डिसोसिएशन रिएक्शन। ओके, प्लस अब यहाँ पे बताइए कितने बी होंगे? YB, चार्ज कितना होगा इसमें बताइए? x नेगेटिव, राइट? यस और नो? Yes sir. हनीफा एंड रिफत समझ में आ रहा है? Yes. ठीक, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? व्हाट इज द DOD? DOD है इसका अल्फा, करेक्ट है? Yes. कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ व्हेन आई स्टार्ट, दैट मींस t is equal to 0, डिसॉल्व ही नहीं किया अभी तक हमने। व्हाट डिड आई डू? आई डिड नॉट डिसॉल्व। देन वी हैव, लेट अस सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ ax by, वी हैव टेकन इट एज c, एंड इन द सॉल्यूशन जब डाला ही नहीं तो डिसोसिएशन तो होगा नहीं। दैट मींस द अमाउंट ऑफ ay plus and bx negative is equal to 0 and 0। सही है ये सर? प्लीज टेल मी। Yes sir. Moving on, as soon as I will dissolve, that means t is equal to something. T is equal to, let us say, at equilibrium. Equilibrium का मतलब we have dissolved and it has completely dissociated. जितना dissociate होना था उतना हो गया. Now it is not dissociating. That means nothing is happening. At equilibrium what happens? Nothing happens at equilibrium. ठीक है, ये लाइन को याद ही रख लीजिए. What happens at equilibrium? What happens at equilibrium? Nothing happens at equilibrium, है ना? That means whatever dissociation should have been happening, it has already happened and now the things are stable. Macroscopically speaking, अगर ऊपर से देखिएगा that means nothing is happening. Always there is something happening inside the solution, collision हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन उससे कोई change नहीं आ रहा आपके पास macroscopic change में, macroscopic scale में, that you can measure. Okay, so at equilibrium nothing happens. That means nothing measurable happens. Nothing measurable happens. ठीक है, equilibrium में क्या होगा आपके पास? From this C, sum of the alpha, ठीक है, sum of the molecules will get dissociated. अब यहाँ पे अगर हम वापस आए तो आपको पता चलेगा how many has been dissociated, तो आप बोलेगा यहाँ पे half into the total is getting dissociated. Yes or no please tell me. Yes sir. 50 डिसोसिएट हो रहे थे, ये हाफ क्या आपका अल्फा है, एंड व्हाट इज दिस 100? इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। उसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे इक्विलिब्रियम। अगर आप लोगों ने चैप्टर किया है तो याद होगा, नहीं किया तो यहाँ पे समझ लीजिए क्या क्या हो जाएगा। हाउ मेनी इज गेटिंग डिसोसिएटेड? c minus alpha is getting dissociated. Yes or no please tell me. Yes sir. Yes. Yes, sir. अब c माइनस अल्फा जब डिसोसिएट हो रहा है, c माइनस अल्फा जब आपके पास डिसोसिएट हो रहा है तो कितना बनेगा? x इंटू सी अल्फा बनेगा, प्लस यहाँ पे y है तो y इंटू सी अल्फा बनेगा, है ना? ये ध्यान रखिएगा। इफ आई हैव 1 मोल देन आई एम गेटिंग हाउ मच डिसोसिएटेड? 1 is getting 1 c alpha is getting dissociated, and how many will be formed? x c alpha and y will be y c alpha. Yes or no please tell me. Yes. Yes. ये समझ में आया सबको? ओके, अब यहाँ पे एक और Yes. चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, c को कॉमन ले लीजिए, will be 1 minus alpha, यहाँ पे आपके पास ये सेम चीज हो जाएंगी, x c alpha plus this will be y c alpha। ठीक है, तो इसमें कोई तो चेंज नहीं आएगा, बट c you can simplify and write c is sorry c into 1 minus alpha, c into
1 माइनस अल्फा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। दिस इज आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। और ये T0 क्या बता रहा है? बिफोर डिसोसिएशन, सही है? यस और नो? यस सर। अरे हाँ, है ना। एंड व्हाट इज आई इक्वल टू, टेल मी। अब ऊपर देखिए हमने 3 फॉर्मूले लिखाए हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन के मुताबिक। आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ना, Divide. है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स After this. आफ्टर dissociation upon number of particles बिफोर before dissociation। एसोसिएशन का केस आएगा तो एसोसिएशन को ले लेंगे। चलिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये सारे पार्टिकल्स जो है आपके कहाँ पे हैं? आफ्टर डिसोसिएशन है, सारे के सारे। करेक्ट है? यस और नो प्लीज टेल मी, यस Yes. Yes. है ना। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे लिख सकते हैं? बिफोर डिसोसिएशन तो क्या था? सिर्फ आपके पास सी था, दिस इज बिफोर डिसोसिएशन, है ना। आफ्टर डिसोसिएशन का लिखते हैं पहले। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इज सी इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स सी अल्फा प्लस वाई सी अल्फा, सही है, डिवाइड बाई सी। इज दैट राइट? यस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। सी सब में कॉमन है यहाँ पे, राइट? सी सब में कॉमन है। सी कॉमन है कि नहीं कॉमन है, बताइए। अरे यस सर। No. है ना। नो, अरे कैसे नो? यहाँ पे भी सी है, It's यहाँ पे भी सी common. है, यहाँ पे भी सी है, राइट हनीफा। न्यूमरेटर में सी इज कॉमन, राइट? सो व्हाट यू विल डू, आई विल राइट सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स के साथ अल्फा भी आएगा ना, एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ठीक है। दिस विल बी डिवाइड बाय सी। करेक्ट है? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes. यस सर। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, सी ले लिया हमने, 1 माइनस अल्फा कर दिया प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। अब यहाँ पे आप देखिए, इन ऑल ऑफ दिस अल्फा इज कॉमन। करेक्ट है? यस और नो प्लीज टेल मी। यस सर। Yes. सी ले लिया आपने। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट दिस एज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, यस है ना। अब यहाँ पे अगर एक्स प्लस वाई देखिएगा, एक्स प्लस वाई तो आपको फॉर्मूले में ही मिल जाएगा, यस और नो, है ना। देखिए एक्स और वाई तो फॉर्मूले में मिल जाएगा ना, यस सर। राइट। MgCl2 में एक्स और वाई कितना होगा? 2 + 1 3, है ना। सो यू विल गेट एक्स एंड वाई इन द फॉर्मूला एंड यू विल राइट लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू n। एक्स प्लस वाई को हमने क्या ले लिया? n ले लिया। दैट इज द n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। n क्या है आपके पास? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। दिस विल बी इक्वल टू, नाउ बिलो तो आपके पास c है, c इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू n। ये फॉर्मूला हो गया। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया? n ले लिया। दिस विल बी इक्वल टू c इंटू, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए? आई कैन टेक अल्फा कॉमन इन बोथ ऑफ यस दीज, यस और नो, है ना। अल्फा ले, सॉरी ये तो 1 होगा, 1। इफ आई विल टेक प्लस तो क्या होगा यहाँ पे? सही है, प्लस लिया हमने तो ये अल्फा है ना, तो अल्फा विल बी व्हाट? -1। ये समझ में आया सबको? यस सर। अब इसी को थोड़ा सा Yes. और अरेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस अल्फा इंटू
n-1 कर दिया हमने, डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने, c कर दिया। ठीक है, अब c और c को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू n-1। अब इसको याद कर लेना, ठीक है। देखना है ऊपर, ऐसा नो टेल मी, Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, दिख रहा है सबको। Yes. Yes. और ऊपर से देखना है क्या, No, sir. नहीं ना। ओके, दैट इज राइट फॉर एसोसिएशन। ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर नाउ इज राइट फॉर एसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन में क्या होगा, इन एसोसिएशन you will have n number of moles of A, ठीक है, and it will associate and it will form AN। ठीक है, it will associate and it will form what, AN, सबसेट में AN। यानी कि आपने अगर 2A लिया तो क्या बन जाएगा आपके पास, A2 बन जाएगा। इस तरह के आपके पास रिएक्शन हो रहे हैं। इज दैट राइट, यस और नो, समझ में आ रहा है। Na is getting Yes, sir. converted to what, AN। okay, it is getting converted to AN। let us say that at t is equal to 0 the concentration will be C here, the concentration will be 0 here, right? Now at t is equal to equilibrium, equilibrium में क्या होगा आपके पास, now what will be happening, there will be a few molecule which will be getting what, which will be getting, यहाँ से तो कुछ घटेगा है ना, which will be getting associated, that means let us write one more thing for association ना। association के लिए आप क्या लिखें, degree of association को दिखाया जाता है बीटा से। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन विल बी बीटा। तो कितने एसोसिएट करेंगे, सो इट विल बी व्हाट, सी बीटा, सी माइनस C of beta will be getting reacted and you will be getting here what you will be getting here is
C upon beta, C into beta, ठीक है? ठीक है, C into beta. अब यहाँ पे आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा, after association here we are having 2 moles, ठीक है? And when it is getting associated, what we are having? We are having 1 mole, correct? Yes or no? Yes. है ना? We are having Yes, 1. That means we are having 2 mole. That was the concentration divided by 2, right? Divide by 2. What is this 2? This 2 is the n here. This 2 is the n here, right? And that is why we are getting 1 mole after association. That is why here also what will happen? C upon C beta upon n. When you divide this by n, you will be getting the number of associated molecules. जैसे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हमने x और y से मल्टीप्लाई किया था, right? Here what we are doing, we are dividing this by n. We are dividing this by n. Is that right? Yes or no? आगे बढ़े. Yes, sir. Okay. Now, if I will write I, so this will be equal to what? This is after. So this will be equal to C minus C beta plus C beta upon n after association or dissociation divided by C. ठीक है, divide by C. अब इसी में आपके पास क्या C कॉमन आ जाएगा, and then you will be getting 1 minus beta plus 1 minus beta plus beta upon n divided by C. C और C को तो काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, है ना? And let us write what will be I is equal to, I will be equal to, what is common here? Beta is common ना, ठीक है? तो बीटा को कॉमन लेते हैं, 1 minus beta plus beta upon n. So 1 plus beta, so we'll take 1 plus beta into में क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे जो नेगेटिव है that will be getting नेगेटिव, एंड जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 upon n minus 1. ठीक है, so this will be I for association, 1 plus beta 1 upon n minus 1. ठीक है, so डिफरेंस क्या है आपके पास फॉर एसोसिएशन? ये है आपके पास. डिसोसिएशन में क्या है? इट इज 1 plus alpha into n minus 1. This is for dissociation. Can you see the only difference here is जो n है यहाँ पे क्या हो जा रहा है? That is 1 upon n, है ना? और degree of dissociation, degree of association is alpha and beta. Please write this down when you're done. Hanifa and Rifat done? Shall you write a question? Phenol associates in benzene to a certain extent. It associates in benzene to a certain extent and forms a dimer. And forms a dimer. A solution containing what? Solution containing 20 gram of phenol in 1 kg of benzene. In 1 kg of benzene has its freezing point lowered by
0.69 Kelvin as its freezing point lowered by 0.69 Kelvin. Calculate the fraction of phenol that has dimerized. Na? Write this question. Let me know when you're done, okay? Okay, that is done. Waiting for Rifat and Hanifa. Done. Rifat and Hanifa. Okay, fine. You can lower your hand. Okay. Now, let us see what is happening here. First of all, they have said that phenol associates into benzene. That means dimer form karta hai na. First of all, is that and it forms a dimer. This is the most important information that we have till now. That it is forming what? It is forming a dimer. That means we have two molecules, and these two molecules are dimerizing, and they are getting into one. Yes or no? Please tell me. Yahi ho raha hai na? Yes. है ना? That means n will be equal to what? N will be equal to 2. है ना? Yes or no? We are having 2a and it is getting what? A2. तो n क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा? Yes or no? Yes. Yes, sir. Hanifa and Rifat, you remember Yes. a? What? Remember n ना? ठीक है. N will be equal to 2, right? Phenol is dimerizing. Therefore, n will be equal to 2. N will be equal to 2. So, next thing is solution containing 20 gram of phenol. सबसे पहले क्या करते हैं इसका आप? And 1 kg of benzene. Now 20 gram of phenol in 1 kg of benzene. ठीक है, इससे आप क्या निकाल लीजिएगा? The number of moles of solute which will be equal to 20 gram upon the molar mass of phenol, जो भी आपका आएगा, ठीक है. And इससे आप क्या निकाल लीजिएगा? The mass of benzene WA which will be equal to 1 kg. कोई दिक्कत यहाँ तक? Yes or no? Please tell me. Any problem till here? No, na? Sir. Calculate the number of moles of phenol. Calculate the number of moles of phenol. अच्छा, पहले तो molar mass phenol का बताइए, चैट में कितना आ रहा है? फेनॉल का फॉर्मूला पता है? So benzene with the OH. हाँ, सही स्ट्रक्चर है वो, तो फॉर्मूला हो जाएगा C6H5OH. कैसे 95 कैसे आएगा? नाइन्टी फाइव है, लेट अस सी. Sir 94 आ रहा है. 94 आ रहा है ना? मैं सोचती Yes. हूँ 94. हाँ हनीफा, C6H5OH. आपने C6H5H6 ले लिया था? हाँ Yes, sir. यूट्यूब. हाँ तो गलत है ना वो, तो ऐसे नहीं होगा, राइट? यू नो, Yes. है ना? अब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तभी तो OH लगा. C6H5OH. ठीक है, चलिए. रिफत आपका भी आ गया? यस और नो रिफत? Yes. अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, कितना होगा?
एक काम कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स मत निकालिए, ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। आगे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो फ्रैक्शंस में बाद में हम लोग उसको काट छाट कर सकते हैं। नाउ यू कैन कैलकुलेट द मोलालिटी, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय WA in kg, NB इज इक्वल टू व्हाट, 20 अपॉन 94, और WA क्या है आपके पास, 1 है, राइट। तो मोलालिटी विल बी इक्वल टू 20 अपॉन 94, यस और नो। मोलालिटी क्या आ जाएगा, Yes. 20 अपॉन 94 Yes. मोल्स पर kg, ठीक है। अच्छा, नाउ आई होप यू नो MB इट इज इक्वल टू, अच्छा हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इवन इन CBSE यू हैव टू राइट इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। डेल्टा T क्या F है या B है, Correct. इज इन F है, डेल्टा TF इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू, I हाँ नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आई नहीं, आई का तो रिलेशन यहाँ पे नहीं आएगा ना, क्योंकि वो आपको दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटली जो है ना, दैट इज ऑलरेडी गिवन, है कि नहीं। थ्योरेटिकली देखते क्या आ रहा है, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF Yeah. इंटू M, KF इंटू मोलालिटी आपके पास कितनी आई है, KF कितना है बताइए तो, व्हाट इज द KF, So it's coming 0.21. दिस होल थिंग। Yeah, molality. मोलालिटी जीरो, नहीं मोलालिटी नहीं कैलकुलेट करना है ना, KF कितना है Okay. आपका, KF कितना है आपका, ओ KF हमने नहीं दिया, KF लिख लीजिए आप बेंजीन का, KF फॉर बेंजीन केल्विन kg per mole, ठीक है, 10 टाइम्स इसमें ज्यादा होता है, खैर। नाउ दिस विल बी व्हाट 0 सॉरी 5.1 into 20 अपॉन 94, इसको कैलकुलेट कीजिए, डेल्टा TF कितना आ रहा है, So 1.071. चैट में भेज दीजिएगा प्लीज, तो बाकी से कंपेयर कर लेंगे हम। ओके, रिफत ने भेजा है, कैन यू आल्सो सेंड दैट इन चैट। वन 1.08 आ रहा है, ओके हाँ 1.08, दिस इज व्हाट कैलकुलेटेड, सही है, यस और नो। Yes. Yes, sir. एक्सपेरिमेंटल कितना आ रहा है, We'll have to add the amount. नहीं एक्सपेरिमेंटल तो दिया है ना सवाल में, देखिए, इज लोवर्ड बाय, Okay. यस और नो, इट्स गिवन, Yes. हाँ है ना, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल आपके पास आ रहा है 0.69 केल्विन, 0.69 केल्विन। अच्छा, अब यहाँ पे बताइए, we have calculated colligative property and we have experimental colligative property. Now go and look into the formulas. I के बारे में बहुत सारे फॉर्मूला लिखे ना हमने, what is the formula in terms of colligative property। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना आपके पास colligative property आ रहा होगा, वो वर्ड आ रहा होगा। Sir, observed upon calculated. हाँ वेरी गुड, ये ऑब्जर्व तो लिखाया नहीं हमने, क्या लिखाया है, जो याद है वही बता रहे हैं बस, क्या लिखा है, Okay, normal upon नहीं observed. नहीं CP भाई CP,
एबनॉर्मल है, एब्जॉर्ब नहीं है, ऑब्जर्व नहीं है, एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड है। यस और नो? Yes, yes. वो एबनॉर्मल है भाई, ऑब्जर्व नहीं है। सच बताइए लेकिन आप जैद, Hmm. जैद यू विल टेल द ट्रूथ ना? Yes. हाँ जैद, को इंतजार में रहता है। हाँ No. पक्की बात। But जितना हड़बड़ में आप क्यों रहते हैं? कितना आ जाएगा आई? सही है? yes, sir. यस और नो? 0.64 आ गया। क्या आ गया आपके पास? आई के आ गया 0.64 आ गया, है ना? अब उसके बाद आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट, आई का एक और फॉर्मूला होता है ना, इन टर्म्स ऑफ बीटा, ये वाला आई इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू बीटा। बताइए आगे क्या होगा? So 1 minus beta upon 2. हाँ, फॉर्मूला देख के बताइए भाई। 1/1, 1 upon n minus 1. ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आई की वैल्यू कर रखिए 0.64 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। एन क्या है आपके पास? 1/2 है, -1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0.64 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू हाफ -1 इज इक्वल टू व्हाट? -0.5 ना। सो दिस विल बी 0.64 इज इक्वल टू 1 प्लस, नहीं 1 माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस, ठीक है। अब वी कैन राइट 0.5 बीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.64। Sir, n was 1 upon 2. So 2 will go नहीं up नहीं, here. n वाज 2, फिर से देखिए आप, Okay, okay. है ना, n क्या था? 2 था। Yes. कितना हो जाएगा ये? 1 माइनस, बीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच नाउ? So 0.72. है ना, दैट मींस 72%, है ना, यानी कि 72 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग एसोसिएटेड। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आई सबको बात? रिफत हनीफा आल्सो। अब ऐसे सवाल है ना, इनको रीडू, जिसमें 2 3 4, जिसमें भी आपके पास 2 से ज्यादा स्टेप है, देयर इज मोर देन 2 स्टेप्स, रीडू दोस क्वेश्चंस, ओके। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिस विल बी आस्क्ड इन 3 मार्क्स। ये भी पूछा हुआ सवाल है, यू कैन राइट दिस वाज आस्क्ड इन सीबीएसई 2016, इट्स ऑल कम इन 3 मार्क्स, ओके। चलिए, जूम आउट, write this down, let me know when you're done.
Zad, what are you asking? Guide. Yeah. Okay. Modern ABC is good. Okay, sir. बट ये है कि उसको कीजिए तभी तभी वो अच्छा है. लेकिन अच्छा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी. ओके Yes, sir. First जैद, of all, है ना, NCERT. फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी. ठीक है, कीप दैट इज एज अ रेफरेंस. कुछ समझ में नहीं आए तो फिर आप उसमें से एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए. बट अगर सॉल्व करने की बात है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द एनसीईआरटी, देन ओनली स्टार्ट विद एनी अदर गाइड. ठीक है, ओके. Yes.